यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेगमेंट का करती कंपनी है कामकाज और एरोस्पेस सेगमेंट डिफेंस एनर्जी और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाती है। बंगलुरु में कंपनी के 2 प्लांट्स हैं और अलग अलग देशों में कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करने का करती है कारोबार। इशू खुल चुका है ऑलरेडी 23 तारीख को, कल खुल चुका है, परसों यानी कि गुरुवार को होगा बंद 26 तारीख को। 745 से 785 रुपये का है प्राइस बैंड। 500 करोड़ की टोटल इशू साइज है, 250 करोड़ का इशू, 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल सिंपल, और करीबन 3,940 करोड़ के आसपास का कंपनी का बनता है मार्केट के, छोटे मार्केट की ये कंपनी यूनिमेक। 2 खास मेहमानों से आपकी मैं करवाता हूँ मुलाकात। सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनिल कुमार पुतन साहब, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सन 2018 से कंपनी के साथ हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सीआईएम टूल्स, इनसाइड स्कैम सेंटर जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पुतन साहब का करीबन 20 साल का अनुभव है। दूसरे खास मेहमान है कंपनी के सीएफओ रामकृष्ण कामोजला साहब, 2017 से कंपनी के साथ है। आप सीए हैं, आईसीएमई और सीएस इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से सर ने एमबीए किया है चेन्नई से, और इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के आप कंपनी सेक्रेटरी रह चुके हैं। इस स्पेस का 13 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव कामोजला साहब को भी है। सर, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, और मैं सवाल हिंदी में पूछ रहा हूँ, अगर आप दोनों को कहीं दिक्कत हो ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन ट्रांसलेट करके आपसे पूछ लूँगा। सबसे पहले पुतन साहब आप समझाएं सर, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है आपकी कंपनी और आपके क्लाइंट्स किस तरह के हैं? We manufacture aerospace toolings and precision components for aviation, defense, and semiconductor and energy industries. When I say aerospace toolings, these are the tools used to build the engine or aircraft and maintain them for the life cycle. Okay, so majority of our toolings are used in maintenance, repairs, and overall facilities also. So we cater to 2 types of customer. One is OEM and second one is tier 1 certain customers who are working with these OEMs. परफेक्ट। तो आप एरोस्पेस स्पेस से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में काम आने वाले वो टूल्स बनाते हैं। जैसा मैं आपके डीएचपी में पढ़ रहा था पुतन साहब, आपने लिखा है कि इस स्पेस में 4 ही कंपनियां हैं, तो जरा मुझे समझाएं फिर इस स्पेस में आपका मार्केट शेयर कितना है, कितनी बड़ी है आपकी कंपनी इस पूरे सेगमेंट में? So see, we have still only scratched the surface. Honestly, we have a lot to go and lot to grab actually from a market opportunity. Overall, we have for tooling, aerospace tooling, we have more than 18 billion market opportunity. So both production as well as MRO toolings together. And coming to precision components, it is more than 150 billion kind of an opportunity, and it is growing fast. मार्केट है। कामोजला साहब, आप कंपनी के सीएफओ हैं, आपसे 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि जो 250 करोड़ का आपका ऑफर फॉर सेल है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इस ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर सेल कर रहे हैं और क्यों? और दूसरा, जो 250 करोड़ आप कंपनी के लिए रेज कर रहे हैं वो कैसे यूज़ करने जा रहे हैं, दोनों चीज़ बताएं सर। Sure. So first of all, thank you for to Zee Business to giving this opportunity for us. So coming to the IPO issue size, 500 CR, wherein 250 जो आपने बताया OFS, which is offer for sale, or 250 CR, we are going to, there is no external investors as such, so this OFS is coming to the promoters, the 5 promoters, we are 5 promoters, and it is coming to us. And another 250 CR, which is a fresh issue, this is going to be used for growth of the business, and the object is what I mentioned, what we mentioned in the RHP prospective document, is first towards capex purpose for the expansion, and second thing, working capital to manage the operations, and third, we also have a loan repayment, which we have availed recently. These are the 3 objectives we have mentioned in the for the objective purpose. पुतन साहब, 2 बिजनेस के बारे में आपसे राय लेना चाहता हूँ।
एक आप थर्मल पावर के बिजनेस में भी आप एंटर करने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ आपके क्या प्लान्स हैं? और दूसरा एक आप प्लान शायद यूएसए में भी सेटअप कर रहे हैं, अमेरिका में भी, राइट सर? सो Yes. वहाँ क्या आपके स्कोप है, क्या क्या प्लान्स है, दोनों बताएं सर। Okay. So coming to nuclear power corporation of India, predominantly nuclear power is what we are kind of mentioned as an emerging business, and we are already working in the segment for last 2.5 years. And there's a huge opportunity that we are seeing to cater to this industry, especially at the subsystems level. Okay, there are at least about 20 to 25 subsystems which are very critical for the reactor, the function. So we are qualified for only few, and we are kind of working to get more and more reactor subsystems approval in our business. And also, when you see the market opportunity there, India is kind of banking on the nuclear sector, clean energy in the coming years. And as everyone knows, India is trying to scale the nuclear sector by at least 3.5 to 4 times from current power generation. अच्छा, And coming to the US plan, we have a large client base in United States. We work with the OEMs as well as Tier 1s, as I mentioned earlier. And a lot of opportunity we are not able to get to India because of the size and the nature of the project, and also a lot of export control aspects. So once we are there in US with our plant, I think probably we can maximize the opportunity, wherein we still want to kind of make the products in India for the globe. And that synergy is something that we're looking at in setting up an US entity. परफेक्ट। कामोजा साहब, इन FY 2023 आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसमें सडनली स्पाइक आया, 273 डेज 275 डेज तक पहुंचा है। क्या उसकी वजह है? क्या ये वर्किंग कैपिटल साइकिल आपके ऑर्डर्स के बेसिस पे कभी भी स्पाइक कर सकता है, बढ़ सकता है? व्हाट इज रीजनेबल वर्किंग कैपिटल साइकिल सर? ओके, श्योर सर। सो क्या हुआ ना सर, FY 23 के बाद वो टाइम में पोस्ट कोविड suddenly I think across all business, even in aerospace, there is a huge growth in the sector happened. तो वो टाइम में क्या हुआ ना, सडनली द ऑर्डर इंक्रीज सो बढ़ चुका है एक्चुअली, एंड देन सडनली लाइक द मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इफ यू सी द रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम 38 crores to 100 crores रेवेन्यू आया ना। सो वो टाइम में क्या हुआ ना, लाइक वर्किंग कैपिटल मोर काइंड ऑफ मोर वर्क ऑर्डर्स, मोर इन्वेंट्री, more kind of receivable days, those things happened. However, उसके बाद like I think stability has come, like generally our inventory cycle 140 days रहता है सर, actually 140 days to 145 days, so both inventory में and receivables में the operating cycle मोटा मोटा 145 days रहता है सर। ओके, सेकेंडली कामोजला साहब, एक और चीज़ बताइए, ये क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क जो है, आपके टॉप 5 क्लाइंट्स 95% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, एक सिंगल लार्जेस्ट क्लाइंट है वो 60% देता है। सो व्हाट आर कंपनीज प्लान्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क? Sure. So yes, your observation is right, sir. Customer concentration, the top 4 customer kind of customers, we have a good chunk of revenue is coming from those 4 customers. But if you see the nature of aerospace business, if you analyze that, generally aerospace business is as such thoda concentric business, in terms of like agar aero OEMs, if you see engine OEMs, mota mota 4 or 5 OEMs, uske alawa zyada nahi hai. So then airframe companies also, only top 2 or only 2 are airframe companies are there, and their tier 1s, who are the global partners also, not many. So as such, the universe is small, sir. Okay, aerospace universe. Second thing, the kind of the nature of business, how it has happened is, when we started, we had only one customer, and year on year, like we start, we have onboarded new customers, every year, alternative, kind of thing, new customers are coming. And अब जो 60% बताया ना, like the first customer, the customer who is having a high concentration, this is the first customer who is continue to give more business till to date.
And the top revenue last year का revenue देख लिया है तो 80% of the revenue or 85% is coming from the 4 customers who are the old customers who are continuing to give the business. And first year में it was very high concentration. Year on year it is coming down because gradually when more customers getting added, slightly ratio will be get distributed. Now abhi coming to your question, like how we are going to handle this in future, how this is going to be continued, to answer to that question is now as of now you see in the our RHP also more than kind of 20 customers we have onboarded, and specifically last 1.5 year, more customers onboarding happened, and those customers started giving good revenue now. So we are confident that the mix is while top customers always wanted to give more business to us, and however the mix slightly will get distributed in future, and concentration risk will slowly come down, sir. ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IPO एंड योर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड इन कैपिटल मार्केट्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.